Vijay, I also wanted to discuss something with you. Yeah. Cadete? To school holidays. They started last. Ja, das haben wir mir auch nicht gesagt. Ja, ich wollte das technisch vorsteht, aber das nicht der Ausdruck, das ist nicht klar. Das kann ich da nicht. Okay, ich schaue mal, was wir machen. Schicken Sie die mal einen Wacker über, die Rolle. Okay, danke vielmals, merci. I know. You understand normally? You know, I'm not trying to pressurize you for anything. I understand the situation. I mean, very well. I understand. But I'm a huge fan and one of my skills. I mean, IS can be installed outside the system. There is a list, but first I think basic spider has to do this, spider has to do this. So that's what I want. Please get me there. What you're asking for is nothing is left now. Here for getting? Yeah. A room, school, with the machines. We have theory and practice machines there to make acceptance. Cylinder grinding machine. What is this? Cylinder grinding. That's all the top everything. You are going to China? You are going to China tomorrow? Okay. So this is the take off before. क्या मतलब वो देसी बंदा है दीवान कसूर
Why it's written? It is the address, but speaker? Collect everything. When everything is ready, then no, 15. How many workers working in this area? He has to Arrange. yeah. चले Peter? Reception जरूर है इनसे सर हमारा खाता ऐसा लगेगा नहीं लगेगा मैडम साहब ये पाइपिंग देखो मैडम साहब ये देख रहे हैं आप कोम्बर के साथ फिर ये पाइपिंग किसने दी है ये जो पाइप है मैडम साहब ये हम बनाएंगे क्या शुरू हो गया काम तो ये वाला क्वालिटी होगी नहीं होगी इससे बेहतर होगी और ये पीछे जो येलो रंग के नजर आ रहे हैं बड़े बड़े ये तो पेंट किया ना तो ये क्वालिटी बच्चे होगी सर इंशाल्लाह सर So let's go upstairs. So. This nice lady also, you must. Yes. Hello. I don't know whether this. I have to check out if it's possible to do like you is in your mind. But anyhow, you tell me. So, it's baking, yeah. Ja. Ist auch gut, ja. Blacher war ja schon dort, oder? Der Blacher war ja schon dort, jetzt kannst du gehen. Ja, jetzt kannst du gehen. Okay. Danke dir, schöne Ferien, tschüss, alles, tschüss. डेजिग्नेशन क्या है थिएटर नंबर का?
about long-term relationship. Peter, what I'm telling you, we're talking about a long-term relationship. Yes. I'm not showing you something. I'm making a commitment, inshallah. Next expansion should be detail, not nothing else. Yes. I would really appreciate and remember this. We will have lots of fun together. I tell you. अंदर चलेंगे. And on top that's a castle. On the other side you can also, one can walk down there. Ja, das ist von der Produzent. Ja. 4 Stunden. Genau, aber sie sprechen so richtig Dänisch. Sie sprechen so aus, genau. Ist Assemblage. Det kan jeg ikke. सारे काम सफाई से करते.
मुझे ना ब्लेंडर लगे, वो ब्लेंडर लगे। और मैं बड़ा सोचता हूँ कि उसके बाद मैंने कोई नेट पर कोई वैसा प्लान नहीं देखा बड़ा एक साथ प्लान। अब मुझे कोई उतार तक उस तरह को प्लांट अगर मिलेगा एक फॉर सेल है मॉरिशस में। उधर काउंटर में ना पूछना चाहिए। सोच रहे हैं अब्दुल्ला क्यों इसका हुआ थका वो हुआ है इतना इनडिफरेंट हुआ है। चलो बेटा स्पेशल मोमेंट जो है चलो काटो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे 18 और 20 कितने साल का हो गया बोला? अच्छा 40 चलो काटो ना सबको एक दो। इतनी छोटी तो मैं नहीं खड़े होके खिला लो पैसे भी लेने जिसको मैं खिलाएगा वो पैसे दे सॉरी यार अब्दुल्ला मैं मार्केट गई थी मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला मैं तो कुछ नहीं रही और मुझे चेंज भी नहीं मिला बड़ी मैं कहती हूँ रीजन है हैप्पी बर्थडे ना मैं खाया भी बहुत मीठा दोस्त को भी दोस्त को भी ये लो गुलाब का दोस्त को भी बहुत मीठा होता है मेरे केक खाया शुरू उनको भी दे दो चलो बहनों को दो लाओ चलो उठो नींद आई उठो बहनों को उठो चलो भैया मैं पिज्जा खाती हूँ अब्दुल्ला तो जाए अब्दुल्ला खा चलो चलो उठो ओवन गरम करूँ कर लो गरम कर लो। अम्मी क्या इतना बड़ा साइज किंग साइज कहाँ घुसा होगी ओ प्लीज अभी ये ले जाना है यार वही उठा रही ठीक है आप नीचे से उठा रहे थे अच्छा मैंने देखा था इतना नहीं मुझे उठा के रखो। उन्होंने पसंद कर दिया
various reasons. I've always dreamed of being a winner of someday a star in tennis or winning Wimbledon or playing on the court, being well liked or something like that. And now this is the place, so I want to live my dream. And if I can have a fantastic season and beat many records and a great career, that would be fantastic. It would be that especially. Federer is retired now at the age of 23 and being satisfied with his mark on the tennis world. But the popular also knows he has the ability to be on top for many years, and he surely has one eye on his Sampras' death. फिर पुरान जाके दिखावांगे कितना अर्सा पाकिस्तान भाई ने मिले 3 साल हो गए अल्लाह बेहतर करे अल्लाह करे दुआ ही कर रहे हैं अल्लाह ताला रहम करे इधर बैठे हुए परेशानी हो रही है अल्लाह ताला करम करे हमारे हाथ पर अच्छा तो रीटर पे 38 लाख रुपए कैसे ड्यूटी पड़ सकती है क्योंकि जो रीटर की एलसी हमने आखिरी खोली थी वो खोली थी 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक की इफ यू रिमेंबर ठीक है जी 1.6 मिलियन पे कैलकुलेटर निकालो 5% ड्यूटी करो उसको स्विस फ्रैंक 59 पे नो यूरो नीचे हुआ है यूरो 78 79 पे हो गया है 80 से स्विस फ्रैंक कितने का देखिए बाहर देखिए मैं सब लंबी बिल्डिंग तरह से करे तो लंबी वाली और United States has given up the search for weapons of mass destruction in Iraq. So the existence of those weapons is simply a malicious place for war. The Iraq regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. But once Saddam Hussein was ousted, even weapons of mass destruction didn't seem to matter to the president. सर बड़ा फटा हो गया अमेरिका में वो weapons of mass destruction नहीं मिले उसे नहीं मिले उन्होंने सर्च ही खत्म कर दिया At that time, the war looked like a brilliant success. Remember, mission accomplished? In January 2004, the former chief weapons inspector told Congress, the intelligence service believed that there were WMD. It turns out we were all in the wrong. The public was still not impressed. Less than 2 months after Saddam's capture, most Americans continued to say it wasn't enough. But as they told, the man who headed the weapons search made this statement. It is clear that Saddam chose not to have weapons at a point in time before the war. 5 days later, President Bush modified his language. Saddam Hussein retained the intent and the capability to rebuild his weapons program. Arriving and a substantive need that could be filled. We had the idea ourselves and gave the school. That's a very good idea. I think that the school brought volunteers to come out. And we here long term and we're part of the community here. So we feel very happy to host the community here. But even though years of surrender cannot shut out the intense that can happen, Saddam is still on the planet, is still so real. Everything is destroyed. Nothing is left. The house is all gone. Throughout Phuket, there are numerous stories such as this, of people trying to move on. But they are all aware that things will never be as they were. In that one school, 2 students and 1 teacher perished in the tsunami. Their absence part of the permanent legacy of those waves. Anish Raman, CNN, Phuket, Southern Thailand. Let's get now to our weekly analysis of the news with Tony Karen at Time.com. We're doing this now live. Tony, first off, you are collecting some concerns that the media is transparent and efficient and including the vote for the people that you know that the Senate
Unidentified only by the name of the society, the criminals and the leading candidates, the single candidates at the top of this list. Now, many of these parties were formed very recently are entirely unknown to Iraqis. But एक कमरा फारेग है, एक कमरा वो यूज कर रहे हैं। मैं और वो एक कमरे में रहेंगे, आपको एक कमरा दे देंगे। ठीक है। क्या ख्याल है आपको? फिर हम वापस कब जाएंगे? At least London would be better than day after tomorrow. परसों वही जो लंदन से फ्लाइट है हमारी के इस्लामाबाद के लिए डायरेक्ट। फिर मैं सर परसों सुबह इस तरह करूँगा, मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा। वो सर वो एक कौन सी जगह है, वो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं मैडम टुसाउट। नहीं, लंदन से कोई 100 किलोमीटर दूर है वो। अच्छा, 8th वंडर। हाँ, मैं वहाँ चल जाऊँगा सुबह सुबह। वो दूर है सर, उसको कहते हैं स्टोनहेंज। सर जाएंगे डिसअपॉइंट ही होगी, समझ नहीं आएगा है क्या वो। मैं जाऊँगा, अगर लंदन में रहना होगा तो मैं तो वहाँ जाऊँगा, अगर मुझे लंदन में समझेगी। सर वो कुछ भी नहीं है सर, बता रहा हूँ। पैसे साले को है नहीं, ऐसे लंदन जा रहे हैं, घूम पर कदम की कर ठहरना है। चले सर नीचे आ रहे हैं। हाँ नीचे आ रहे हैं सर। ये बड़ी फेमस स्ट्रीट है, इसके दोनों तरफ आपको देखिए बिल्डिंग देखते जाइए, सारी बैंकिंग है। और यहाँ एक ट्विंस टावर की तरह भी आपको बिल्डिंग नजर आएगी आपके राइट में, पूरी क्लास की तरह। ये देखिए दो बिल्डिंग, ये वाली ये आपका मैसेज की एंट्रेंस है। आप लोग कौन सी यूज़ कर रहे थे, मुझे अंदाजा नहीं। कहाँ से पूछ रहे थे आप, कहाँ से जा रहे थे? हम लोग मेन एंटर से भी गए, मार्केटिंग वाली से। हाँ, और वहाँ से भी गए गैलरी से नहीं, हॉल नंबर तक वो सीढ़ियाँ से ऊपर जा रही है। हाँ, यहाँ ये मार्केट से थोड़ा क्या होता है, मुझे इसकी लॉबी बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत सही लॉबी इसकी अच्छी है, बस लॉबी अच्छी है। हाँ इंशाल्लाह यार, बड़ा अच्छा सही तरीके से। हाँ यहाँ तो डेफिनेटली ये हमारी है नहीं कोई लोगों की पहचान या पता नहीं कौन करते हैं, ये तो है इस बिल्डिंग की बात करें। ये बैंक ये ट्यूबलाइटें जल रही हो रंग बिरंगी ना। हाँ जी सर, बैंक है, पूरा बैंक की बिल्डिंग ऑफिस है, बैंक नहीं है।
ऑटो वाटो मेरे फैमिली आते जाते थे भाई वगैरह किधर जाने? अच्छा तो क्रॉस ना कर ले। डोनाल्ड कब पकड़ा नहीं पड़ा? अलग करते हैं डोनाल्ड को जैसे क्या वैसे क्या चलो ये खाता है ऐसे कर दिया ठीक है तो महाराजा पहले महाराजा पैलेस अगर पर पाउंड ही ये 2600 का पर 10 पाउंड महंगा नहीं सर कन्वर्टर के बाहर कैसे चार बदल में तीन बैठे हो ठीक है बहुत खाना खाया सर यार अफसोस बड़ा हुआ हैं हैं उसका अफसोस बड़ा हुआ कि हमने खाया नहीं पेमेंट कैसे उन्होंने कर दी उनको इशारा कर दिया आज आप बाथरूम के लिए उठ रहे हैं वैसे नहीं कि आप उसके लिए जा रहे हैं पेमेंट के लिए नहीं मैं तो वाशरूम गया वाकई फिर दोबारा मैं गया कार्ड रख लिया उसने कहा ठीक है कार्ड रखिए उसमें क्योंकि पहले मुझे समझ नहीं कि मैं कैश दूँ उसमें कितना कैश दूँ Ohne das gewaschen und einmal mit das gewaschen. Das war toll, ne? Schade. Gleich beim ersten Mal. Hätte ich nie gedacht. Meinst du, wir schaffen es nochmal besser? Wir können es versuchen. Immer häufiger enden in letzter Zeit Demonstrationen. Opposition und konservative Interessentengruppen uns Knüppel zwischen die Beine. Und wir sind so dumm und stolpern auch noch über diese Knüppel. Ich will nicht, dass wir sie ihnen zurückwerfen. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass bei allen Shows, die wir Wir haben einen Drohbrief bekommen. Ein Drohbrief? Drohbrief, anonym.
noch einmal einen Witz über Bundeskanzler Schmidt. Wie oft habe ich Ihnen nun schon gesagt, dass Sie auch in der Küche die vorgeschriebene Mütze tragen müssen? Was soll denn das? Komm, wir spielen was. Was denn? Kennt ihr das? Wie geht denn das? Du bist Frank Elstner. Und du Frau Elstner. Ich bin eine Kandidatin und ich wette mit dir, dass du nicht errätst, welches Bein falsch ist. So, die Wette gilt. Ja? Moment, ihr seid Ted fragen. Ted, hast du einen Namen? Ah, zufälligerweise. Haben wir da? Ja, zufälligerweise. Hier. Welches Bein falsch ist? Welches Bein? Ted? Ich geb's auf. Siehst du? Das hab ich dir gesagt. It means that in terms of just spending money on hardware or software, there isn't going to be that much of it around through 2005. Many people are predicting a slowdown in the latter half of this year, so enterprises are becoming even more cautious about their investment. So what we see is focusing. So I think areas where there's an opportunity for driving growth, like say business process enhancement, for example, probably be a bit more important than areas like infrastructure where commoditization is driving outsourcing. Marcus, good to see you. Thanks very much for coming in this morning. Thank you very much. Telling us a little bit about the survey. Marcus Bloch with us from Gartner on the CIOs that they talk to and their spending intentions for 2005. Now, the Argentinian government will today present its restructuring deal to shareholders. The country owes investors more than $100 billion after defaulting on bonds during the country's worst economic crisis 2 years ago. There's widespread opposition, those you won't expect, to the deal among investors who argue they should get more. When we come back, Rodrigo de Fonseca is an emerging markets analyst at Dresdner Kleinberg Wasserstein, who will talk with him about the implications of this deal. That's in a bid to save its $3.5 billion merger plan. US beer maker Coors has sweetened the terms offered to Canadian brewer Molson shareholders as it strives to head off resistance to the merger. And London-based SAP Miller has also expressed interest in talking to Molson. Tim Fox, who's editor of the Dow Jones Newswire, will be up. We'll find out what's brewing in this sector with him. See you in a minute. CNBC ticker is sponsored by Finex.com, the financial betting exchange. Again, images demonstrating the cataclysmic force of those waves. The video was shot from a balcony overlooking the sea, and you can see they're almost entirely engulfing that caterpillar, reportedly by an Australian tourist there sent to the Reuters news service. It says a number of copies of it had been distributed to curious tourists and locals who hadn't seen the tsunamis themselves. Yes, young Michelle Reed takes her shot at the men in the first round of the Saudi Open. Is she poised to be the first woman to make the cut on the men's tour since the end of World War II? रिकॉर्ड ही कर लेते हैं तो पॉलिटिक्स में जाना है
Repeat after me. I, George Walker Bush. I, George Walker Bush. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. 35 words which change the world. हेलो हाँ तो फेंक नहीं वो राइट ठीक है किसमें आया था 75 में जितना भी नमक आप हमारी माइंड के अंदर देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट नमक होगा, उसमें रोशनी पास होगी। थोड़ा सा कच्चा और पहाड़ आएगा, लकड़ और पत्थर की सपोर्ट आपको नजर आएगी, उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर नमक के शहर में दाखिल हो जाएगी। ये लकड़ और पत्थर की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर ये तमाम उस दौर से लेकर आज तक इस माइन के अंदर से नमक निकाल रहे हैं। जितना नमक हम निकाल चुके हैं उसका रकबा बनता है 110 स्क्वायर माइल, 110 मुरबा मील इसके अंदर से नमक निकाल चुके हैं। टोटल 17 मंजिलें ये माइन जा चुकी है, 5 इसके ऊपर है, छठी पर आप सैर करेंगे, 11 इसके नीचे है। इसी शक्ल की बनी हुई है, टोटल 17 स्टोरी। तो ना कोई देख सकता है, ना दिखा सकता है, चंद खास पॉइंट हमने बना रखे हैं वो आपको नजर पाएंगे। टोटल माइन की लेंथ बनती है 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हमने वेस्टिंग एरिया बनाया हुआ है, अदर साइड 2 किलोमीटर वर्किंग एरिया। रकबे और एरिया के लिहाज से ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट पर पोलैंड में है। पोलैंड दुनिया में 2 मुल्क है जहाँ पर कुदरती नमक पाया जाता है, पोलैंड और पाकिस्तान। बकाया जो मुल्क है वो सी साल इस्तेमाल करते हैं, समुद्री नमक इस्तेमाल करते हैं। तो इस माइन के अंदर मैंने आपको पहले बताया 1200 किलोग्राम नमक रोजाना हमारी प्रोडक्शन है, जो ज्यादातर हम ICI फैक्ट्री को दे रहे हैं, जो इसका सोडा ऐश बना रही है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बेल्जियम, अमेरिका, जर्मनी और मुल्की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। ये पानी तो जा रहा है, ये भी पानी जाया नहीं जा रहा, इसका भी सोडा ऐश बनाया जा रहा है। इस माइन का टेम्परेचर पूरे साल में एक ही रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। सर्दी में आप पाएंगे इस माइन को गर्म पाएंगे, गर्मी में आएंगे ठंडा पाएंगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सब शहर को दिलचस्प बनाने के लिए आ गया कुछ नाम आपने दे रखे हैं, जिस तरह ये सारा नमक निकालने का रूम है, कमरे की शक्ल में हम नमक निकालते हैं। ये 35 फीट हम कमरे की शक्ल में नमक निकाल लेते हैं, और ये 35 फीट हम पहाड़ की सपोर्ट के लिए पिलर छोड़ देते हैं। जितनी भी 17 मंजिलें हमारी माइन जा चुकी है, रूम के नीचे रूम है और पिलर के नीचे पिलर है। 50% हम नमक निकाल रहे हैं और 50% पहाड़ की सपोर्ट के लिए छोड़ रहे हैं। इसके अंदर आपने खाल रखा, बीच में बल्ब लगाए हुए हैं, बल्ब जल रहे हैं और नमक के सब कलर आपको नजर आ रहे हैं। 3 कलर हमारी माइन के अंदर पाए जाते हैं नमक के।
3 कलर, रेड, व्हाइट एंड पिंक। रेड सारा आयरन बनता है, पिंक मैग्नीशियम, व्हाइट सोडियम क्लोराइड। तीनों कलर अगर ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे तो एक ही कलर आएगा व्हाइट, जो खाने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। इस मस्जिद को बने हुए 50 साल हो चुके हैं। ये पहले 4 दीवारी थी, मीनार अभी हमने बनाया है। तो इस मस्जिद का नाम हमने दे रखा है मदनी मस्जिद। पुराना नाम इसका मजदूरों की बादशाही मस्जिद था। इसके आगे 2 किलोमीटर सीधा काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्किंग एरिया शुरू हो जाता है। ये हमारा विजिटिंग एरिया है, इस तरफ हम चलेंगे। तस्वीरें आप बना सकते हैं, तस्वीरें बना ये साथ नमक का बार रोड है जिस पर आता है बार आगे होके खींचे तो सलाह पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है वो जिधर लिखा हुआ था कैफे की कैफे नजर आ रहा है बनेगा चलेगा पानी के साथ भारत नमक बन रहा है, उसकी शक्ल बन गई है पहाड़ी जैसी। इसका नाम हमने दे रखा है शिमला पानी। जब से कतरा कतरा पानी गिरकर दोबारा नमक बनने में इसको बनने में 60 साल लगे, 60 ईयर्स। ये 60 साल में पानी तैयार हो गया। इसकी टेम्परेचर की वजह से, इसकी आबो हवा की वजह से जो कतरा पानी का गिरता है दोबारा साल्ट बन जाता है। तो सारे इसको यूज नहीं किया जाता, साल्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे बच्चे को पीछे भाग गए, हाँ लड़के दोनों पीछे भाग गए। मस्जिद के पास तस्वीरें क्या जाए सारे तरफ आ जाए, इस तरफ से पिक्चर बनाए। ये देखिए करें, ये दोबारा नमक बन रहा है तो इसका नाम हमने दे रखा है अंगूरी पाक। लाहौर के मशहूर शायर थे साद दानिश साहब, वो यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने बोला कि आले नमक रात को बतलाया करे, तो छत से कतरा कतरा पानी गिर रहा है उसको अश्क के नमक बतलाया करे, नमक के आंसू। ये जो दोबारा बन रहा है इसको आहे नमक। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो फिर बतलाना विसाले नमक, अगर नहीं मिले तो फिराक के नमक। बच्चों के लिए ये अंगूरी काफी है, बच्चे इसको तोड़ते भी रहते हैं। कतरा पानी लाहौर के मशहूर शायर थे साद दानिश साहब, उन्होंने फरमाया कि आले नमक रात को बतलाया करे, जो ऊपर से कतरा गिर रहा है उसको अश्क के नमक, नमक के आंसू। ये जो दोबारा बन रहा है इसको आहे नमक। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो फिर बतलाना विसाले नमक, अगर नहीं मिले तो फिराके नमक। बच्चों को वेरी गुड जी, ये बड़ा अच्छा बना। ये सारे इस कमरे की आप हाइट देखें 235 फुट इसकी हाइट है। चीजर वर्क का तमाम हाथ की कटाई है। मुगलिया दौर में इसके अंदर से नमक निकाला गया, ऊपर से काटते हुए नीचे आए हैं। ये 80 फुट गहरा तालाब है, पानी से भरा हुआ है। तो वो जो छोटी 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 गारें ऊपर नजर आ रही हैं, वो ऊपर वाले फ्लोर नजर आ रहे हैं। 235 फुट इसकी हाइट है। ये इस गेट का नाम हमने दे रखा है बाटी गेट। बाटी गेट नाम पर मैं खुद नहीं देखा लाहौर में। सारे इस कमरे की हाइट देखें, 240 फुट इसकी हाइट है। ये राइट साइड पर आपके ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं, इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर से काटते हुए नीचे आए हैं मुगलिया दौर में। इसलिए सारा फर्स्ट फ्लोर ऊपर से गिनती करते हैं क्योंकि ऊपर से काटते हुए नीचे आए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ये 6 पर आप चल रहे हैं। इसके नीचे 7, 8, 9, 10 इस तरह बनी हुई है। तो मुगलों ने कहा तो ऊपर से काटते हुए नीचे आए। तो किधर तक गए, नीचे किधर तक? ये 11 स्टोरी नीचे है इसके नीचे। तो सर इसका नाम हमने दे रखा है 240 फुट इसकी हाइट है। चीजर वर्क का तमाम हाथ की कटाई है, तो इसका नाम हमने दे रखा है असेंबली हॉल। ये हमारे वर्करों के असेंबली हॉल है, यहाँ सदा बाहर असेंबलियां कायम रहती है, टूटती नहीं है। इसको बनाने में 70 साल लग गए थे। ये एक कमरा 70 साल में तैयार हुआ है। ये 100 फुट गहरा तालाब है। ये हमारा सबसे गहरा तालाब है, 100 फुट इसकी गहराई है, 150 फीट इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर हम सर कहते हैं कि 20 साल 25 साल पुराना पानी था, तो जब पानी को हमने खाली किया तो दीवारों के साथ देखेंगे आप 7 सेमेस्टर बढ़ गया कुछ नहीं होता। अभी ब्लर करें
तुम्हारा बात क्या अच्छा नहीं इस पानी को जब खाली किया गया तो ये दीवारों के साथ चमक चमक आप देख रहे हैं हीरो की तरह ये 7 फीट उबाल गया कुदरती तौर पर पानी के अंदर तैयार आगे आ जाए यहाँ पर आप अपनी क्वालिटी आप ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए वापस आकर आप तस्वीरें बना सकते हैं 10 मिनट बाद बनाया हुआ बैठ कर बात नहीं सकते ये साथ हमारा ऐसा नमक निकालने का ये होल करते हैं हम 4 फुट का हाथ से ड्रिल करते हैं इसके अंदर बारूद करते हैं सेफ्टी फ्यूज बाहर रखते हैं सेफ्टी फ्यूज को आग लगाकर आप दूसरे कमरे में चला जाता है सेफ्टी फ्यूज ऐसा है जब बारूद तक पहुंच जाए धमाका होता है नमक का टुकड़ा गिर जाता है टन 2 टन 10 टन तक फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में डाल के डोज दिया जाता है ये आगे साथ रोज स्पोर्ट मोड करके या दोनों तरफ से कुछ गाड़ी चला है पानी से बने ये नमक की जो आपने फर्स्ट बनाया इस कलर में आपने कलम लगाई ये बयान से मोड़ के ये छत का नजर आ रहा है छत है कि पानी का छत नजर आ रही है छत नजर आ रही है छत नजर आ रही है क्या सर देखिए वो छत उसके नजर आ रही नीचे देखना नमक ही है छत नजर आ रही है 150 फुट इसकी लंबाई है तो कतरा कतरा पानी गिरकर जो दोबारा नमक बन रहा है उसकी शक्ल बन गई मीनारे पाकिस्तान की अच्छा ये देखें इस कैक्स पानी में देखें मीनारे पाकिस्तान का ठीक सही और सर खुदाई के दौरान जो कुदरती तौर पर अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर बन गई लाइट जो पड़ रही हाथ रखा हुआ ना बेटे वो लाइट जो पड़ रही है ये देखिए लाइट डाल रहे हैं तो लाइट डाल रहे हैं ना तुम्हारी मर्जी ये है मीम ये दा हम इस तरह भी बनता है देखते सही वेरी गुड मुताबिक इसको आग नहीं लगती जलाते हैं लोग रबड़ की तरह स्मेल देती है करोड़ों साल एज बताई जाती है 2500 फुट कराई में ये हमें मिली है वह चीज मिली है जिस तरह सारे एक फारसी मिसरा हर के तर कान नमक रफ्त नमक शो नमक की कान के अंदर हर चीज नमक बन जाती है ये वह लकड़ी है जो नमक ही नहीं बनी करोड़ों साल से यहाँ मौजूद है 2500 फुट गहराई में हमें मिली है तो ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का चप्पू था वो जा रहा है कहते हैं कि तूफान नूह आया था दुनिया में पानी ही पानी हो गया था या पानी खुश्क हुआ वो जमीन डूबा तो नमक के पास आया यहाँ पर सारे समुद्र By our efforts, we have lit a fire as well. That goes to John Dykstra. Spider-Man 2, John Kramer. I love my job. What an honor to be singled out in a year with so much terrific work. Boy, am I glad it wasn't the 4th episode of Lord of the Rings. What a joy to work and share this award with so many talented people. Our director, Sam Raimi, Scott, Anthony John, all of the artists, technicians, and producers who collaborated on the effects for this picture. We'd like to thank our families, Hi Cass, Chloe, Mom.
We'd like to thank Sony Pictures for all your support. Thank you, Academy. Thank you, everyone. Evil is real, and courage triumphs. Make the choice to serve in a cause larger than your wants, larger than yourself. And in your days you will add not just to the wealth of our country, but to its character. America has need of idealism and courage because we have essential work at home, the unfinished work of American freedom. In a world moving toward liberty, we are determined to show the meaning and promise of liberty. In America's ideal of freedom, citizens find the dignity and security of economic independence instead of laboring on the edge of subsistence. This is the broader definition of liberty that motivated the Homestead Act, the Social Security Act, and the GI Bill of Rights. And now we will extend this vision by reforming great institutions to serve the needs of our time. To give every American a stake in the promise and future of our country. We will bring the highest standards to our schools and build an ownership society. We will widen the ownership of homes and businesses, retirement savings, and health insurance, preparing our people for the challenges of life in a free society. By making every citizen an agent of his or her own destiny, we will give our fellow Americans greater freedom from want and fear, and make our society more prosperous and just and equal. In America's ideal of freedom, the public interest depends on private character, on integrity, and tolerance toward others, and the rule of conscience in our own lives. Self-government relies, in the end, on the governing of the self. That edifice of character is built in families, supported by communities with standards, and sustained in our national life by the truths of Sinai, the Sermon on the Mount, the words of the Quran, and the very faiths of our people. Americans move forward in every generation by reaffirming all that is good and true that came before, ideals of justice and conduct that are the same yesterday, today, and forever. In America's ideal of freedom, the exercise of rights is ennobled by service and mercy and a heart for the weak. Liberty for all does not mean independence from one another. Our nation relies on men and women who look after a neighbor and surround the lost with love. Americans at our best value the life we see in one another and must always remember that even the unwanted have worth. And our country must abandon all the habits of racism, because we cannot carry the message of freedom and the baggage of bigotry at the same time. From the perspective of a single day, including this day of dedication, the issues and questions before our country are many. From the viewpoint of centuries, the questions that come to us are narrowed and few.
Did our generation advance the cause of freedom? And did our character bring credit to that cause? These questions that judge us also unite us, because Americans of every party and background, Americans by choice and by birth, are bound to one another in the cause of freedom. We have known divisions which must be healed to move forward in great purposes, and I will strive in good faith to heal them. Yet those divisions do not define America. We felt the unity and fellowship of our nation when freedom came under attack, and our response came like a single hand over a single heart. And we can feel that same unity and pride whenever America acts for good, and the victims of disaster are given hope, and the unjust encounter justice, and the captives are set free. We go forward with complete confidence in the eventual triumph of freedom. Not because history runs on the wheels of inevitability. It is human choices that move events. Not because we consider ourselves a chosen nation. God moves and chooses as He wills. We have confidence because freedom is the permanent hope of mankind, the hunger in dark places, the longing of the soul. When our founders declared a new order of the ages, when soldiers died in wave upon wave for a union based on liberty, when citizens marched in peaceful outrage under the banner Freedom Now, they were acting on an ancient hope that is meant to be fulfilled. History has an ebb and flow of justice, but history also has a visible direction set by liberty and the author of liberty. When the Declaration of Independence was first read in public and the Liberty Bell was sounded in celebration, a witness said it rang as if it meant something. In our time, it means something still. America in this young century proclaims liberty throughout all the world and to all the inhabitants thereof. Renewed in our strength, tested but not weary, we are ready for the greatest achievements in the history of freedom. May God bless you, and may He watch over the United States of America.